एक बार फिर से इस चैनल पर मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर। एशिया कप को लेकर थोड़ी बातें करेंगे। इंडिया नेपाल के बारे में नहीं, बहुत हो गया। इंडिया पाकिस्तान के लिए भी नहीं, टाइम है उसमें। हम बात करेंगे कल का मैच जो हुआ था और थोड़ा आज के मैच के बारे में। आज यानी कि लाहौर में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान हैव टॉप्ड Group A after that washout against India, and now Bangladesh are number 2. Both teams are into the Super 4. आज से Super 4 दोस्तों शुरू हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बिकॉज पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट मुल्तान में शुरू किया, फिर श्रीलंका गए पाले के लिए, एक मैच वहाँ खेला, बारिश हुई, मैच नहीं हुआ, फिर ये वापस गए हैं और अब ये लाहौर में खेलेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश हैव ऑल्सो बिन बैक एंड फोर्थ, बट दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रेजी नेचर ऑफ हाउ दिस टूर्नामेंट इज गोइंग। आते हैं उस मैच पे। कल का मुकाबला दोस्तों श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, टक्कर का मैच था ये। आई थिंक एक बार फिर से बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका, माफ़ी चाहूँगा, बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका की बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाई। दे गॉट टू अ गुड टोटल, इट सीम्ड अ गुड टोटल, पर जैसे कि कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर श्रीलंका को बाहर होना था और अफगानिस्तान को आगे जाके सेकेंड राउंड में जाना था, तो दे नीडेड टू गेट दोस 292 रन्स इन 37.1 ओवर्स। ठीक है, जोरदार बैटिंग करी, अच्छी पारियां खेली, थोड़ी बैटिंग को उन्होंने रीशफल किया, गुलबदीन नायब को 3 पे भेजा और नजमुल्ला जदरान जो अक्सर 5 पे खेलते उनको नंबर 8 पे किया था शायद। एंड यू सॉ कि लाइक अफगानिस्तान वर ट्राइंग टाइम अगेन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक श्रीलंका वर नॉट रियली डूइंग टू मच। मतलब जो भी हम वहाँ बॉल डालेंगे, कैच पकड़ेंगे, बट एक एंथुजियाज्म, एक आग जो हम नॉर्मली श्रीलंका से एसोसिएट करते हैं, मेरे हिसाब से कल के मैच में वो मिसिंग था जब उन्होंने फील्ड लिया। लेकिन दोस्तों जब अफगानिस्तान लग रहा था कि ले जाएगी मैच, अचानक मुजीब उर रहमान का 37.1, ओके, दे क्लेम, जोनाथन ट्रॉट, राशिद खान, द होल अफगानिस्तान मैनेजमेंट क्लेम्स कि उनको बोला गया था कि 37.1 ओवर्स के अंदर ये ख़त्म करना है, ये उनका कहना है। इसीलिए 36वां ओवर, 36 ओवर के, सॉरी 37 ओवर के लास्ट बॉल पे जब राशिद को स्ट्राइक नहीं मिला, मैंने कहा यार वुडंट ही वांट टू बी ऑन स्ट्राइक, क्योंकि राशिद खान ने अभी 2 चौके लगाए थे, हम इनकी बैटिंग देख चुके हैं बहुत बहुत बार, ये एक फील्डलेस हिटर है। अलाउ मी अ सेकंड टू हैव अ सिप माय कॉफी बिकॉज द स्ट्रीम इज कॉल्ड कॉफी इन क्रिकेट विथ जेमी। और 37 ओवर के बाद दोस्तों दे वर 289 फॉर 8। ठीक है, विकेट्स अभी गिर रहे थे और यही तो होता है क्लासिक वनडे मैच ना, वन टीम टेक्स द एडवांटेज, वन टीम पुल्स इट बैक, देन विकेट्स फॉल, देन बाउंड्रीज कम। तो लग रहा था कि यार अफगानिस्तान के हाथ में मैच है, भले ही विकेट्स गिरे थे, लेकिन यार मुजीब थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं और राशिद खान तो मतलब वीव सीन हिम इन द आईपीएल, वीव सीन हिम इन टेस्ट क्रिकेट, वीव सीन हिम इन लीग्स, इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बंदा गेंदें वेस्ट नहीं करता, ये 18 गेंदों पे 35-40 रन मारने वाला हिटर है। तो एट द एंड ऑफ द 37 दे वर 289 फॉर 8, यानी कि एक बॉल अफगानिस्तान की जो रीडिंग थी इस गेम का, या जैसे कि उनके कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा था, हेड कोच, कि हमें बोला गया था कि 37.1 के अंदर आपको 292 मारना है। ठीक है, बिकॉज उस बेसिस पर नेट रन रेट जो है, अगर वो जीत जाती, नेट रन रेट वुड हैव नॉक्ड ऑफ श्रीलंका, okay, co-hosts, defending Asia Cup champions, they would have been knocked off and Bangladesh and Afghanistan would have gone through. ठीक है, अब हुआ क्या कि 37 ओवर के बाद जो 38 यानी कि 37.1 का जो टारगेट था, उस गेंद पर मुजीब और रहमान ने बैटिंग किया ना। प्रॉब्ली ही थॉट कि भाई मुझे छक्का लगाना है, मुझे बाउंड्री लगाना है, क्योंकि 3 रन चाहिए एक गेंद पे। उन्होंने ढीली शॉट मारा और यहां पे दसुन शानेका की थिंकिंग को देखिए दोस्तों। पेसर्स वर बोल्ड आउट, ही गोज टू धनंजय डिसिल्वा, पार्ट टाइम स्पिनर, फॉर द मोस्ट क्रूशियल ओवर ऑफ द मैच। पहली गेंद पे मुजीब और रहमान ने वहीं खड़े खड़े, ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, एंड ही लॉफ्टेड द बॉल स्ट्रेट डाउन टू द फील्डर एट लॉन्ग ऑन। उसी के साथ श्रीलंकन टीम रिजॉइस, धनंजय डिसिल्वा स्प्रिंटेड डाउन टू द फील्डर, ऑल द गुड थिंग्स यू डू व्हेन यू गेट अ विकेट। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर राशिद खान अपने घुटनों पर गिरे एंड ही लुक्ड फिनिश, बिकॉज जैसे कि बाद में कहा था ट्रॉट को लगा, अफगानिस्तान ड्रेसिंग रूम को लगा, राशिद खान को लगा कि भैया ये मैच खत्म हो चुका है, क्योंकि इनको बोला गया था, सो दे क्लेम एंड वी सॉ ऑन टीवी एज वेल, कि 37.1 ओवर्स के अंदर आपको 292 पार करना है टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, हाउएवर जैसे कि होस्ट ब्रॉडकास्टर ने हमें बाद में बताया था, असलियत ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के भी आया हूँ ताकि आई डोंट गेट इट रॉन्ग, अगर
37.2 ओवर्स के बाद ये 293 पे होते तो दे स्टिल कुड हैव डन इट, ठीक है। सीन ये है कि अगर दूसरी गेंद पे जो उनके आखिरी बैट्समैन जो आए नंबर 11 फजल हुक फारूकी, अगर वो चौका लगाते, इनके पास एक्चुअली 2 और गेंदें थी लगाने के लिए, विच इज वाई everyone watching was shocked, not Rashid Khan, not the dressing room, everyone was shocked कि कैसे लगातार 3 गेंद को, जिनमें से एक फुल टॉस था, नंबर 11 फजल हुक फारूकी ने डिफेंड किया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला, आई वाज लुकिंग एट ऑल द परम्यूटेशंस, इट जस्ट सीम वेरी वेरी स्ट्रेंज। हमें मालूम था कि अभी नेट रन रेट के हिसाब से कैलकुलेशन आगे चल रही थी एंड दे कुड हैव स्टिल गॉट इट, बट अफगानिस्तान क्लेम कि उनको बोला गया था कि 37.1 ही है। तो जब घर बैठे हमें अपने स्क्रीन पे दिख रहा है कि लेटर द अफगानिस्तान टीम डिड नॉट नो, फॉर मी दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। आप एक अंतर्राष्ट्रीय टीम हो, ठीक है, आप हल्के टीम नहीं हो। जोनाथन ट्रॉट, यू नो, द साउथ अफ्रीकन, went to England, you know, played for Warwickshire, had a very very good career for England, खासकर टेस्ट में और वनडे में भी। उन जैसे कोचिंग स्टाफ को नहीं मालूम था कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इसको देख के मुझे 2003 वर्ल्ड कप याद है। आपको याद होगा, इट वॉज अ मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट वॉज श्रीलंका, आई थिंक वॉज एट वेस्ट इंडीज। बारिश हुई थी और मार्क बाउचर, जैक कैलिश, शॉन पॉलक, उस लेवल की टीम, you know, they did not know what the calculation was, and Mark Boucher also defended a ball and did not take a single that could have put South Africa further in the tournament. इत्तेफाक की बात है कि जोनाथन ट्रॉट भी एक साउथ अफ्रीकन है, क्या इनके कारण ये हुआ है? आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट सेइंग आई एम जस्ट रिप्लेइंग व्हाट आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, बट इट वाज वेरी 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 सरप्राइजिंग कि जोनाथन ट्रॉट ने मैच में कहा था कि मैच ऑफिशियल्स ने उन्हें नेट रन रेट कैलकुलेशंस के बारे में नहीं बताया गया था। वो कह रहे हैं उनको नहीं पता था कि अगले 3 गेंद में अगर एक 4 और एक 2 रन मिलते तो वो जीत जाते, या उनको अगर 297 का टारगेट होता तो वो 38.1 में होता। नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, दीज थिंग्स ऑफन आर डिसाइडेड इन अ वेरी रैंडम वे। मैं कोई मैथ्स का जीनियस नहीं हूँ, मैं भी बहुत बार पिछले 20-25 साल में कंफ्यूज हो चुका हूँ कि किस तरह से ये डकवर्थ लुइस वाले नेट रन रेट सिस्टम्स ये लोग निकालते हैं। बट इफ द अंपायर्स न्यू, why wasn't it communicated to the Afghanistan? Strange, no? But for me, it's going to be a massive choke by Afghanistan, क्योंकि मेरे हिसाब से मैच उनके हाथ में था, और अगर राशिद खान स्ट्राइक पे आते उस गेंद के लिए तो हो सके मैच वहीं खत्म हो जाते। बट द फैक्ट दैट दे वर नॉट अवेयर जस्ट लेफ्ट अ वेरी स्ट्रेंज सिग्नल फॉर मी। कुछ कमेंट्स लेते हैं। मुनीब शाह कह रहे हैं, seems like Afghanistan didn't know or were not informed. That's what we've been led to believe, which I find very very strange. समीर कुमार कह रहे हैं, हार कर जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं तो क्या जीत कर हारने वाले को अफगानिस्तान कहते हैं? सही है समीर कुमार, नए व्यूअर हो आप, अच्छा है। वेरी वेरी स्ट्रेंज नहीं कि अफगानिस्तान को मालूम नहीं था कि क्या क्या है, कंफ्यूजिंग है, बट विद द कोचिंग स्टाफ यू हैव, इट शुड बी कंफर्म्ड। Apex saying it's all management fault. They should have done calculations and sent messages. बिल्कुल, just like South Africa in 2003, in 2023 we've seen Rashid Khan and Afghanistan get it all wrong. Unfortunate रहा अफगानिस्तान के साथ, हार्दिक कह रहे हैं। राशिद ने 37.1 के बाद उम्मीद ही छोड़ दी थी और रही सही कसर प्रेशर ने पूरी कर दी, फारूक बल्ली हो गया, 2 रन से हार गए। पर 3 लगातार बॉल उन्होंने टक टक क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आया। In these confusing situations, I think umpire should take up the duty to inform the batsman. Maybe it's a good point. I would like to believe that this was told to them. It shouldn't be just relayed via a sheet of paper to the dressing room. But I think the game has come too far for everyone not to be aware. Very, 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 very strange. Jaideep is saying, shouldn't they show the details on the big screen there, like how many balls? Yes, normally it happens. I remember it happened in 2003. It happened in 1992. Why it didn't happen there? I think it's because this is a pretty farcical tournament overall. We've seen all the rain being washed off in certain matches. We've seen all the backstory. I just think it's not the best, or it's a very ill-prepared Asia Cup. I agree with you. They should show it, and normally they do. It was not a rain-affected match. Umpires have nothing to do with it. Management ने भाई फिर भी, बट आई गेट द पॉइंट कि अंपायर्स को थोड़ा तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर्स द्वारा ही आते हैं ये सारे कैलकुलेशंस. दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इट व्हेन थिंग्स हैपन. बट येस, आई वुड स्टिल ब्लेम Jonathan Trott and the Afghanistan management for not knowing what's happening. De Kock retirement. Yeah, De Kock quit test cricket a couple years ago. It's very clear. जितने ये T20 लीग्स में दिखते हैं मुझे, तो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि De Kock ने इस कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का सोचा.
Pranav, unfortunately not, because a couple days ago the organizers put out some social media posts. Okay, talk journalism has been scrapped this year. They don't have the funds. Very, very sad that Avinash and his team do not have the funds, the resources to do it. I had a great time. It's coming there last time, but isbar, it's not happening because they don't have the funds. Very, very unfortunate. Why is it that a team like New Zealand performs so well in ICC tournaments? See, yes, very valid question. ये पहली बार नहीं है ये सवाल जो आ रहा है. I'll come to the second part of your question, Dumru. New Zealand, there's no real reason why they do it, right? If you compare them to most other countries, वो छोटे देश है, लोखंडवाला से कम उनकी population है. There are more sheep than people in New Zealand. But they take their sport very, very seriously. I've had the privilege of spending over a month there during the 2015 World Cup. चाहे रग्बी हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हैंडबॉल हो, जो भी इनके स्पोर्ट है, एक तो इनकी स्पोर्टिंग कल्चर बहुत बहुत तगड़ी है. लाइक ऑस्ट्रेलिया, इट्स वेरी रोबस्ट. छोटी देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटी है वहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. बट यू गो टू अ प्लेस लाइक डुनीडन यूनिवर्सिटी, ओटागो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे छोटे छोटे द टेस्ट ग्राउंड, द वर्ल्ड कप वेन्यू ग्राउंड इज ऑन द कैंपस of the campus of the university there. You go to Auckland, वहाँ पे तो स्कूल से लेकर रग्बी, क्रिकेट, बड़े बड़े मजबूत इनके फैब्रिक है, स्पोर्टिंग फैब्रिक, राइट? Because they take their sport very seriously, because they know they're underdogs. I think they have to punch a lot above their weight. Sorry to use a cliche. They have to struggle harder. They have to do a lot more. It's a small country, way off in a remote corner of the world. But something about how serious they take their sport, the pride with which they take their sports, I think that trumps the fact that their talent pool when it comes to cricket is much lesser than other countries. They don't have the money. They're not a financially viable board as compared to the BCCI, the ECB, or Cricket Australia. But something about them, and when you manage to switch on mentally, like you said, in World Cups, they have done very, very well. They've reached the final of the last two one-day World Cups. In 15, I was there at the MCG. In 2019, I was almost there, but I flew back after the semi-final, just before the semi-final. So yeah, I don't have a concrete answer, but having covered cricket, having been to New Zealand, having asked experts, having asked journalists there, having spoken to former cricketers there, retired cricketers, it just seems that इनके जो DNA में जो respect है sporting culture के लिए, it probably has taken them a lot further. In regards to your second question, like I said earlier on in a couple shows across platforms, normally मैं न्यूजीलैंड को अपने टॉप 4 में डालता, लेकिन जब पहली बार ये सवाल पूछा गया तब तक तो केन विलियमसन नहीं थे. अब वो आ रहे हैं वापस, but I just like KL Rahul, he's not going to be anywhere near match fit like we hope. So yes, I still will stick with my call saying मैं उन्हें फिलहाल टॉप 4 में नहीं डाल रहा हूँ because they won't have a, let's say, an optimum level Kane Williamson. They don't have Michael Bracewell, who's been an outstanding white ball player for them. I think they're a depleted side. Any other year, I would have said yes, they're in my top 4. But despite Williamson coming back, I'm still not putting them in my top 4, which is actually sad because मैं बहुत बड़ा supporter रह चुका हूँ Black Caps का down the years. But who knows? It's a World Cup. That match against India at Dharamshala is a match that New Zealand should win. मैं बहुत हैरान हूँ कि BCCI ने ये मैच वहाँ रखा न्यूजीलैंड में, जहाँ पे उनके तेज़ गेंदबाज, चाहे लॉकी फर्गसन हो, कायल जेमसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, टिम साउदी हो, इनको बहुत मज़ा आने वाला है उस मैच में. So who knows? I wish them all the best, and very good news that Kane Williamson is back. Atul, what's up? What's happening to the Asia Cup? Still not clear how the match will happen in Colombo due to rains. Colombo, strange time to have the World Cup. I've said it before. Late monsoon, अक्सर बारिश होती है. Where else do you do it? You have to keep it in Sri Lanka. Everywhere you go, there's going to be rain. So I just think we're looking at a very, very bleak situation. Yes, Apex, he is back. Game of the tournament in Lahore, and Sri Lanka game of rain and rain breaks. Strange, now you have Lahore, Multan, scorching heat, not a drop of rain, and then Palekele, rain. Yes, Jaideep, also generics, yes. जय भाई, डू रिटायरमेंट की खबर आ रही है डिकॉक और गब्बर की, क्या ये खबर सही है? डिकॉक ने तो बोल दिया और गब्बर सिंह का मैंने सुना, लेकिन गब्बर के पास है ही क्या और खेलने के लिए देश के लिए. तो अगर गब्बर ने कहा है तो प्रॉब्ली सही, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ. मैंने अब तक ये खबर कहीं गब्बर नहीं, आई हैव नॉट रेड दैट न्यूज़ एनीवेयर येट. Interesting match today as well. Ban versus PAK. It does get interesting. It does.
अभी नेट्स बैक पूछ रहे हैं आपको नहीं लगता हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहिए लेफ्ट हैंड स्विंग बॉलिंग? नहीं, आई डोंट। आई थिंक ईशान किशन ने जो बैटिंग करी पिछले मैच में एक्सीडेड मैनी मैनी पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। सिचुएशन टफ था, टॉप ऑर्डर ने फिर से रहता फैलाया था एंड द वे ही प्लेड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अब आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते हो, लेकिन जहां वो खेल रहे हैं उनको वही रखो। इनके साथ वो मत करो कि कभी ओपनिंग कभी 4। पहली बार ये 5 पे खेल रहे थे वनडे मैच में, गॉट 82 ऑफ 81 balls. Fantastic match shifting innings from 66 for 4. I would not want to disturb India's top 3. Left-handed है, कोई बात नहीं, keep him at number 5 because I still, despite the inconsistent form of Rohit, Shubman Gill and Virat Kohli in the past few months, I personally, मैं चाहूँगा कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली टॉप 3 रहे, क्योंकि इनकी सफलता ऑफ कोर्स अलग अलग लेवल्स ऑफ सक्सेस। विराट कोहली इज विराट कोहली, रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा, 3 डबल हंड्रेड्स। शुभमन गिल इज हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द ईयर, अब वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन रोहित बने ओपनिंग करके, शुभमन बन रहे हैं ओपनिंग करके, और विराट कोहली बने विराट कोहली नंबर 3 पे खेल के। एंड देन श्रेयस अय्यर गॉट द बेस्ट स्टैट्स इन नंबर 4 पिछले 2 साल में। तो मैं ये टॉप 4 चेंज नहीं करूंगा, ईशान किशन को आप नंबर 5 पे ही डालिए। Afghanistan has something brewing. Brilliant spin attack may cause a few surprises. They should have won yesterday. I think they should have bowled better. Rashid Khan and Mujib are not anywhere near the prime form they should. That's a problem. On a better day, they would have skittled Sri Lanka for 240. I think 292 was a bit too much. And then we all saw how they choked in the batting. Even though South Africa will choke eventually, still they have one of the strongest playing 10 play. I agree. Not a single World Cup has gone by where you've not assumed कि साउथ अफ्रीका आपके फेवरेट्स में है, लेकिन हमेशा की तरह इनसे ना हो पाएगा। मैं तो बोल चुका हूँ कि मेरे जीवन में साउथ अफ्रीका कोई वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, और फिलहाल मेरा प्रेडिक्शन सही रहा है। और डिडंट वॉच 92, आई वाज टू यंग, मुझे हल्की हल्की धुंधली मेरी यादें हैं। मैंने 96 में इनको जो मैंने सुना, मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, मेरी उम्मीदें थी। 96 में उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चोक कर दिया। चोक नहीं, आई थिंक ब्रायन लारा प्लेड अ बेटर मैच, बट देयर वर सम स्ट्रेंज सिलेक्शंस। 99 सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया, आई वाज देयर एट द ग्राउंड, विटनेस दैट। 2003 मैंने अभी जिक्र किया था, 2003 में उनको एक डकवर्ड लुइस शीट पढ़ना नहीं आया। 2007 में अगेन जिस बंगल्ड अप जैक कैलिस, वेरी वेरी रिवीलिंग। हर्शल गिब्स की ऑटोबायोग्राफी में उस नॉकआउट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पारी खत्म हो गई थी, गिब्स वहाँ कुछ एटलीस्ट एक छोर से वो खड़े थे, ट्राइड टू टेक द मैच एंड ही वॉक्स बैक आफ्टर गेटिंग आउट एंड ही राइट्स कि I was shocked to see Jacques Kallis, the great Jacques Kallis, our iconic legendary all-rounder. He had showered, he changed, he packed his bag, और वो एक magazine पढ़ रहे थे, like he was already done. So it just reveals how South Africa have a knack of just not keeping it collectively, with their wits when it comes to World Cups. 11 में again, match was not out of their hands. कौन थे उनके स्पिनर? एक इनके न्यूजीलैंड का स्पिनर थे, was it Vettori or was it the other McCullum? Hashim Amla went to cut the ball, took an inside edge onto his boot into McCullum's glove. One moment of madness, Jacob Oram madness, the match change. फिर 15 ऑकलैंड, मैं भी वहाँ पे था, जो 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए मैं गया था, जहाँ पे साउथ अफ्रीका खेली है। दोनों मैच ऐतिहासिक मैच थे, और दोनों मैच में जो चोक किया ना साउथ अफ्रीका ने, ओह क्या कहूँ मैं। आई थिंक आई शुड स्टे अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीकन टीम्स। सो यू आर राइट, दे हैव अ वेरी गुड पेस अटैक, बट दे आर नॉट गोइंग टू गेट टू द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। आई नो इट। राहुल राजा बाबू है बीसीसीआई का, बिल्कुल सही कहा आपने समीर। जय भाई, हाउ डू यू रेट ऑजीज एंड साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप स्क्वाड? ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई सेड, इवन बिफोर आई सॉ देयर स्क्वाड, आई हैव देम एज माय फेवरेट्स। साउथ अफ्रीका, दे कैन पिक व्हाटएवर दे वांट टू, they are never going to impress me at a World Cup. So why is the Asia Cup still happening in Colombo? Well, where else do you go? It's raining in Kandy, it's raining everywhere else. आप इस मैच को लेकर भी कहाँ जाओगे ना? तो unfortunately we're looking at a lot of rain in the next 10 days. भाई अंपायर ने सही कैलकुलेशन सही नहीं किया, उन्हें अफगानी प्लेयर्स को सही इक्वेशन बताना चाहिए था। बिल्कुल अजय कुमार, बताना चाहिए था, बट लाइक वन ऑफ द व्यूअर्स सेड, ये डीएल, ये रेन वाला मैच नहीं है, तो अंपायर्स का कायदे से कोई हक तो नहीं है ये बोलना बार बार। बट येस, इन अ परफेक्ट सिचुएशन इनको ऑप्शन चाहिए था अंपायर्स को कि हम उनको बोले, बट अंपायर्स की बात नहीं है, टीम मैनेजमेंट को। यार आजकल के टाइम में इनिंग्स ब्रेक छोड़ो,
ओवर्स ब्रेक में हल्का सा कुछ बैट्समैन को क्रैम्प होता है तो 3-4 प्लेयर्स और स्टाफ तो भाग के आते हैं ड्रिंक्स लेके, टू गिव मैसेज। कल आप मैच को रोक सकते थे। यू हैड एवरी राइट टू स्लो द मैच डाउन, टू सेंड अ मैसेज। जॉनसन ट्रॉट का ये कहना कि भैया अंपायर्स ने हमें नहीं बताया था, हो सके ये सही है, लेकिन आई थिंक इट्स बिट ऑफ एन एक्सक्यूज। आपको जाके हर चीज, हर एंगल को आपको खुद जाके डबल चेक करना चाहिए था, सॉर्ट करना चाहिए था। अंपायर्स शुड हैव टोल्ड देम, बट they didn't. So I think something is lost in translation there. Don't you think Babar Azam is overrated? I wouldn't say overrated because जितना भी मैं को देख चुका हूँ, he's very, very, very good at what he does. Most of his runs are scored against low-ranked team, that too in flat pitches. Again, जब बाबर आजम ज्यादा वहीं खेलते हैं, and for many many years when Pakistan was not playing away, he had no option but to score. I don't know off the top. In fact, let me just get his stats. I don't know off the top of his head what Babar Azam's stats are, but let's it's a good question. Since we have time, let's look at Babar Azam's stats. Should we start with the test format? ये comment कहाँ से आया था? Comment आया था डमरू से। Let's look at Babar Azam's stats across countries. ठीक है, let's do this now. एक सेकंड, कहीं जाना मत। Let's look at, I'm starting with Babar Azam's test stats because I also want to. Versus Australia, he averages 44. Versus Bangladesh, this is test, he averages 80. Against England, he averages 61. Against Ireland, 36. Against New Zealand, 57. Against South Africa, 34. Against Sri Lanka, 54. Against West Indies, 38. And against Zimbabwe, 1. ठीक है? Now this is the overall. अब देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर इनकी बैटिंग एवरेज क्या है। ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच के बाद बाबर का बैटिंग एवरेज 28 से थोड़ा कम है। That's a problem. You need to be great to score runs in Australia. He's got 100, but he's averaging a little under 28. In Bangladesh, he averages 50 almost. In England, इनका average है 65. In Ireland, इनका average है 36. In New Zealand, a tough place to score runs, he's averaging 47. In Pakistan, he's averaging 71. In South Africa, he's averaging just under 37. That's actually a good average for an Asian batsman because not many Asian batsmen have been able to do consistently well. And I think Babar's played one of the toughest South African pace attacks. So I'm okay with a batting average of 36.83. In Sri Lanka, he's averaging just under 50. In the UAE, he's averaging just over 40. In West Indies, he's averaging 36.55. That could be better. And in Zimbabwe, 1 test match. Okay, so yes, if you compare his stats to his contemporaries, probably it's a little less. So, but I would say the fact that he's averaging 65 in England is very good. 47.33 in New Zealand, very, very good. And that 37 in South Africa, I will actually take. He's averaging almost 50 in Sri Lanka, which against Sri Lankan spinners is also a good average. So, it's not bad at all. Let's come to his ODI stats for the same thing. Let's just ignore the overall figures. Let's talk about Babar outside Pakistan. In Australia, 5 matches, 282 runs, he's averaging 56. That's very good. In England, he's got 1183 runs, 300s, 550s, he's averaging 51. In Ireland, 1 match, 29. In Holland, he's averaging 74. In New Zealand, the average dips to 24. In Pakistan, 76. In South Africa, after 8 one-day matches, the guy is averaging 60. That's outstanding. In Sri Lanka, he averages 30. That's poor. In the UAE, he averages 64. Wow. In the West Indies, he averages 75. And in Zimbabwe, he averages 184. So, अगर मैं उनके one-day आंकड़े देखूं, he's not underrated at all in my book. And let's look finally at his T20 stats. Again, the most flimsy format where stats always don't tell the true story because of the nature of the game, but because he's Babar, because he's number 1 ranked in one days, because he opens in T20s, let's check out Babar's T20I batting averages Pakistan se bahar. In Australia, 26. In Bangladesh, 9. In England again, 45. In New Zealand, he's averaging 50. In Pakistan, 47. In South Africa, look at his T20I stats in South Africa. He's averaging 51.57 with 1 century and 2 50s in just 7 innings. He averages 40 in the UAE, he averages 37 in West Indies, and he averages 31 in Zimbabwe. Is this enough to say he's underrated? Not in my book. Is he good enough to be compared as an all-format batsman with Virat Kohli, Kane Williamson, Joe Root, and Sanju Samson? I would say definitely in my book,
बाबर कम्स एट नंबर 5. These are the top 4 क्योंकि इनके आंकड़े more across the countries are somewhat better. Again, I don't have exact stats, but जितना मैंने देखा है, I think definitely in my book, Babar is not overrated, but he comes at number 5 as an all-format batsman after these 3 players. I hope that answered your question because you asked my view, right? Okay, what was the point of announcing the squad so late if this is the squad BCCI are going with? Because BCCI will always do things at the last moment, right? They wanted to see, they were waiting and waiting and waiting to see how Bumrah and then Iyer and Rahul held up. They saw Iyer in one match. KL Rahul needed a few more matches, which is very worrying to me, like I said before. But when the deadline is September 5th, देसी लोग कभी कुछ काम पहले नहीं करते, हमेशा एंड में करते हैं. So I'm not surprised that BCCI chose the very last day to announce it. हो सके, like we read in my colleague and friend Devendra Pandey's report in the Indian Express, where it was revealed that the squad was picked on the 4th while that Pakistan match was being washed out. They could have announced it on Sunday, but they waited. They said, let's beat Nepal. और जैसे ही नेपाल मैच हो गया तो उन्होंने वो कर दिया. So, yep, that's it. I'm not surprised कि they waited until the 5th. And I'm not surprised. I mean, अंधे बहरे को पता था कि एशिया कप के जो 18 प्लेयर्स थे, उनमें से सैमसन, तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे. इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल, वेरी एक्सपेक्टेड. बल्कि आई हैड रिटन फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट्स डैफा न्यूज, जो इस चैनल के स्पॉन्सर भी हैं और जिनके लिए मैं आर्टिकल लिखता हूँ. आई हैड रिटन द वर्ल्ड कप अनाउंसमेंट पीस 2 days before it is announced. और यकीन करिए मुझे एक भी वर्ड चेंज नहीं करना पड़ा. मुझे मालूम था कि यही 15 पिक होगा. सो ठीक है यार, इट्स इंडियन क्रिकेट. लास्ट 5 ODI 4 बांग्लादेश जीता है, 1 पाक. इसलिए मैं कह रहा हूं आज का मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है. आज आप नेपाल की टीम में क्या पोटेंशियल देखते हैं? अच्छी बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग है, फील्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, बट फॉर अ टीम विच कम्स फ्रॉम सच अ स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, to be ranked number 15, to get ODI status 5 years ago, to push Pakistan for 25 overs, to push India while batting, I think the future is very bright. They just need more exposure. संजू सैमसन कहाँ से आया तो वो केरला से वाया दिल्ली, बट सवाल ये कि अब वो गए कहाँ, इनका हो गया पैकअप, आए कहाँ से ये सबको पता है, इनका फ्यूचर क्या है ये देखना पड़ेगा. अब तो वो नहीं, आई थिंक इट्स पैकअप फॉर संजू सैमसन. समीर कह रहे हैं क्या आईसीसी बिग बैश में फुल स्टेडियम कवर करने मैच करवा, क्या आईसीसी बिग बैश में फुल स्टेडियम कवर करने मैच करवा चुका है? आप पूछ रहे हो कि क्या आईसीसी, यार समझ नहीं है आईसीसी से बिग बैश का क्या लेना देना है. जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं आपके कमेंट से, आप ये पूछ रहे हो कि बिग बैश में कई स्टेडियम्स पे फुल कवर है, क्या आईसीसी को ये करना चाहिए? अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर देंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा. हाउ कैन बीसीसीआई डिफेंड दिस? स्काई इज फिट फॉर वर्ल्ड कप बट नॉट एशिया कप. स्काई इज फिट फॉर एशिया कप. स्काई इज नॉट अनफिट. आई डोंट नो व्हाट यू मीन सागर. व्हाट्स देयर टू डिफेंड? स्काई इज not injured. He's fit. I don't know what you mean. Sky is fit for World Cup. No, but Sky is not injured. Sky is very fit. But Suryakumar Yadav has always been a reserve player when it comes to one-day cricket. आप इनके कोई भी 26 मैच उठा के देखिए वनडे पारी, सारे के सारे 26 मैच तब आए हैं जब one of the first choice players is picked. वो खेलते हैं जब कोई बड़ा प्लेयर नहीं है. Now that the first choice players are back, everyone knows कि Sky is not going to get a chance. The team has faith in him, which is why he's in the Asia Cup, but we all know he's not going to play a match in the Asia Cup, and unless someone gets injured in the World Cup, Sky is going to be carrying drinks for the whole World Cup. But regards to your point about being fit, he's not injured, he's 100% fit. He's just not good enough to get into the 11 of the Asia Cup or the World Cup. PAK versus Bangladesh is on the roads. On the roads बोलो तो Pata wicket. I think PAK will. I think Pakistan will win. They're playing at home and they've got a fantastic pace bowling attack. Hi JMI, do you think कोलंबो में बाकी मैचेस होंगे? भाई ऑप्शन क्या है? क्रिकेट मैनियक और कोई ऑप्शन नहीं है. कहाँ जाओगे? पालेकेले में बारिश है, कैंडी में बारिश है, आप कहाँ जाओगे? गॉल जाओगे आप? It's right there on the coast. It's south as compared to north, but from what I'm hearing, they have no option but to keep the matches going, which means बहुत बारिश को हमको झेलना पड़ेगा यार. चलिए लास्ट फ्यू क्वेश्चन. अजय कह रहे हैं भाई कुछ भी कहो लेकिन इंडियन प्लेयर्स का लेफ्ट आर्म पेसेस के खिलाफ स्ट्रगल इंडिया को ले डूबेगा. मैं 15 साल से कह रहा हूँ ये बात. कुछ नई बात बताओ भाई. क्या इंडिया को टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन होना चाहिए? बट कौन? ऋषभ पंत तो नहीं है, वो भी ओपनर नहीं है. ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं, बट
आई जस्ट फील वाई स्वॉप हिम ना, रोहित को, जब तक रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं उनको ओपनिंग ही करने दो, जब तक शुभमन गिल वापस तगड़ी फॉर्म में नहीं आते हैं उनसे ओपनिंग करवाई, क्योंकि शुभमन गिल का जो नाम बना है वो ओपनिंग करके आया है. I like I said, I would prefer Rohit, Shubman, Virat a year as India's number 4, top 4 for the World Cup based on stats, based on reputation. I would keep Ishan Kishan at number 5. वो इतने बेहतरीन लेफ्टी भी नहीं है कि वो जाके कुछ वहाँ कुछ ज़्यादा कर पाएंगे. Just my reading of the situation. Jayva, I think he was talking about Telstra Dome. Remember the South Africa and Australia series way back? Bilkul, there was a 3-match series. They tried it. They still have grounds. That Melbourne ground is retractable. But the uptake, the money, the amount of services required to keep these stadiums active, I don't think ICC will ever, and all the boards will ever have every single ground like that. I would love to it, but yeah. 10, 11, 12 को रेन है, वॉश आउट होगा मैच, लग रहा है मैच ही होगा. Why does ACC lack vision and proper planning? Do they not know about rains in Sri Lanka? Everyone knows about rains in Sri Lanka, but this is the same ACC headed by Jay Shah, whose BCCI did not know that it's going to be a problem having India-Pakistan the day after the Navratri start. So ये उम्मीद ना छोड़े आप logic sense. This is the worst planned one-day World Cup in the history of World Cups only because it's been handled by the BCCI. तो अगर आप विजन और प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ये तो आप इस BCCI से headed by Jay Shah and his gang, ये तो आप उम्मीद ना करें. It's because they waited so long, बहुत बार कह चुका हूँ, they waited so long playing big daddy, small daddy, bully, India, Pakistan, कि श्रीलंका के खिलाफ इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. दुबई में करते, वहाँ गर्मी है. Basically, they had to keep the Sri Lankan board happy. ये जो इनकी gang है, this is all politics. It was always going to be split between Sri Lanka and Pakistan. They are not going to give it to Bangladesh. हालांकि वहाँ इतनी बारिश नहीं हो रही है. It was always going to be Sri Lanka, and I'm not surprised because this is the most shambolic BCI I've ever seen. बहुत बार कह चुका हूँ मैं अपने shows पे. Exactly, Shitish. That's exactly what I'm saying. It's politics. ईशान जैसा प्लेयर प्योर टीम में नहीं है, इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा, वो भी ईशान किशन ही जीतेगा. शाबाश शुभम, आई लव योर ऑप्टिमिज्म. What changes do you think India should make after the World Cup? Rahul Dravid's contract is not being renewed. I can tell you for a fact. He has been told by the BCCI कि सर वर्ल्ड कप के बाद हमें आपसे कोई नाता नहीं चाहिए, जहां पे इंडियन टीम के बारे में हो उसको आप मान लीजिए. Rohit wants to play for 2 more years. I think he might play for 2 more years. But again, I don't see wholesale changes because no player is so bad that they should be dropped. I think Rohit and Virat, especially Virat, should play for a couple more years. But I think the captaincy has to change. I don't know how you're going to do it. You need to make changes. You need to get a left arm pacer, whether it's Arshdeep or someone. You've got to pick someone. You've got to start planning for 4 years ahead. You've got to hope that Rishabh Pant comes back quickly. You've got to move on from Mohammad Shami. I think they moved on from Chahal. You need to back and hope that Washington Sundar stays fit. He's a very, very talented player. But I don't see any wholesale changes knowing India's history. Your thoughts on Sharda's article? Sharda sent me an article a couple days ago. Can you tell me which one it is? Because I saw her message, but it's been a few days. I have not read it. She was doing something on Indian cricket. She wanted some details from me a few months ago. But that reminds me, I need to open my WhatsApp and quickly go read Sharda's article. Thanks, Sagar. They should make a cricketer as a BCCI head. They've tried that. It's not the most logical option, but this is definitely the worst BCI that I've seen from an operational standpoint. Chalo, last couple questions. After this World Cup, they should try Jaiswal and Gill as openers. Jaiswal's time will definitely come. I think he's got 10, 12 years easily. But I just don't think, I've said that India should move on from Rohit the day after the World Cup, but I just don't think they're at that stage yet. I think हमें कुछ और साल तक रोहित को झेलना पड़ेगा. Ashutosh is back. We had a problem with Dhawan's strike rate of 65 to 85, but by the same logic, KL isn't let go, who at number 5 has the same strike rate. Plus, he has never helped India in a high-scoring chase, only in low-scoring. Like I've said, the way Ishan Kishan is batting, 4 matches, 450s, I don't see KL Rahul playing anytime soon. Nope. Is the team being selected with the thinking that Dhoni is helm? Sky selection will be a disaster just because that Dhoni is at the helm. I'm not sure what the Dhoni connection is. Sky selection to me makes no sense. 26 one days, averages of 24. This year, 2023 में उनकी बैटिंग एवरेज 14 की है.
He's a really bad one-day player, and now because you have given him chances, he's underperformed so badly. After 26 matches, he doesn't have one innings that I can remember, and now you're not playing him anymore. So if खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में एक बैट्समैन को चोट लग जाती है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ऑप्शन है एज अ बैकअप प्लेयर जिनका फॉर्म खराब है, जिनका टेम्परमेंट खराब है, और आप उससे उम्मीद करते हो कि वो मुंबई इंडियंस के जैसे बैटिंग करे. आई थिंक इंडिया हैव वेस्टेड a World Cup slot by picking Suryakumar Yadav. They should have picked another all-rounder or another spinner. रोहित स्टेटमेंट वी डोंट हैव. अरे जयदीप भाई, मैं तो रोहित की स्टेटमेंट्स को पानी मतलब नॉट एनी इंपॉर्टेंस टू रोहित शर्मा. वो कुछ कहते हैं, कुछ और करते हैं, हंसते हैं. गुड गाय, फैंटास्टिक बैट्समैन, बट लेट्स नॉट गो बाय हिज स्टेटमेंट्स. ये और राहुल द्रविड़ ने मोर देन परफॉर्मेंसेस, दे हैव गिवन सम एपिक memorable statements in the last year. It's crazy, crazy, crazy. चलिए, I've got to go now. Oh भाई 1 बजे. Anyways दोस्तों, I have to go now. I've got to get ready for my next show. ठीक आधे घंटे बाद 1:30 बजे आप मेरे साथ रोपोसो ऐप पे जुड़ सकते हैं. अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, iOS स्टोर. इट्स ऑल देयर. इट्स रोपोसो, ROPOSO. हर एशिया कप मैच डे पे दोपहर 1:30 बजे और इंडिया मैच पे रात 11 बजे मैं वहां पे एक लाइव क्रिकेट पॉडकास्ट करता हूं. मच लाइक दिस शो, मैं कुछ बोलता हूं, आपकी बात सुनता हूं. तो आइए जुड़िए मेरे साथ 1:30 बजे रोपोसो पर, और फिर 2 बजे TV9 भारतवर्ष पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. आई हैव टू गो नाउ. लव यू ऑल. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज हिट दैट लाइक बटन बिफोर गोइंग. टेक केयर.